हाँ मैं उसे फोन किया मैं उसको बदलना है कि मैं मेरा नंबर है उसको ओटीपी आ रहा ठीक है ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕੁੜੀਏ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦੂ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਓਟੀਪੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੋਨ लाइट जिले और हम भी तो अपॉन ले तो लेगा तो ड्रॉलिंग है करने का ठीक है सुनाओ ना बंदा मैं कोई भी एक सेकंड आप देर करने लगता तो इधर ही कर है ना तो बोले ध्यान
ऐसा व्यक्ति की सबसे पहले करते हैं my confidence रिश्ते हैं जिनकी आजादी से हर आस पूरी होती है Give me an immense pleasure to welcome all the offline and audience present there and our Ramesh College of Education Discovery who has plugged us together here today to participate in this seminar on the theme Faculty Development Program. I would finally like to get an opportunity to welcome our online chief guest of the day, Dr. Professor P.K. Dal, Principal Bhargava College of Education, Samba, and our online chief guest, Chairman of Ramesh College of Education, Rajendra Sharma. As we all know, today is the second day of the program. Goddess Saraswati is the embodiment of wisdom and learning.
So let's seek her blessings before further proceeding. For this, I would like to request Principal of the college, Dr. Sabila Khanji, and Chairman of the college, Dr. Rajinder Singh ji, to further lighten the Now, I request Principal of the college to present a bouquet as a token of love and respect to Chairman of the college. Thank you, sir. Now, it is time for Principal Sir to come on the dais and throw a light on today's program and welcome and give a welcome address. Thank you, sir. Good morning, all of you. First of all, I would like to thank with the whole of our to Sri Rajendra Prasad ji, the chairman of the college, for kind financial support and moral support to conduct the 3 days faculty development program. That is the only consideration and achievement that is done by our honorable chairman of the college. Without motivation and financial assistance, no one can conduct such type of events. Thereafter, I am highly thankful to our chief guest, offline chief guest of the day, Dr. E.K. Dhar, who is the principal of Anwar College of Education. Thereafter, I am also thankful to Sri Amandeep ji, Principal Tariq College of Education. I am also thankful to Dr. K.K. Sharma ji from New Age
education. I am also thankful to all madam who is kind enough to support the program. Thereafter, I am Dr. Sri Professor Bhalia sir, who is kind enough to accept lecture on the topic presentation skill. We are now first day we have achievement, and the topic of the previous day was whose what was Professor Dr. Pandaji from Jammu University. The keynote and the chief guest of the event was Srimati Madhu Singh ji from Khalsa College of Education and Research. I am highly thankful to them. Today, we are going to discuss the topic presentation skill, whose expert was, leading Sri Professor Bhalia sir from the Central University of Jammu. I am also thankful and welcome to our staff who is kind enough to assist us and arrange all the ins and out of the events. I am also thankful to supporting staff and welcome to all the participants here in this program with the core of heart, and thankful to all of them for achieving such type of achievement. I am again and again thankful to Sri Rajendra Sharma ji, who is kind enough to support financial assistance and motivate us to doing 3 days faculty development program. Faculty development program is one that can lead to skill the teacher not only of this institution but also of from the other institutions, imparting instruction for teacher education as well as working people working at different institutions as a teacher. I am thankful to Rajendra Sharma ji. Again, I am welcome and thankful to all of persons who has supported us to conduct the seminar. Thank you. Thank you. Again, I would like to welcome our online chief guest, Professor P.K. Dhar, Principal Bhargava College of Education, and I want to introduce him among you. Professor P.K. Dhar, Principal Bhargava College of Education, Samba, has 25 years of experience in the field of teaching. As far as his educational qualification is concerned, he has achieved his MSc Geology, first class from Kashmir University, MA second class from University of Jammu, MPhil in Education from BMU, MSc Environmental Science, first class from IGNOU, MA English first class from IGNOU, MA in Public Administration. He has also completed his Doctor of Philosophy Education from EPS Purvanchal University. Sir, I will request you to throw light on today's event by sharing your valuable thoughts on the program. Please, sir. कर्मण्यवाधिकारस्य महाबलेषु कदाचन
Ma karma phal hetu rabu, Mach sangu sakho karma. Most respected Chairman, Revered Shri Rajendra Prasad ji, my colleague, Principal, esteemed Dr. Saifullah Khan ji, my respected principal colleagues from the various institutions, respected teacher educators and pupil teachers from other institutions. It gives me an immense pleasure today morning that I am the part of this great FDP initiated by Ramist College of Education. This program is really a treat for all the participants across the Union Territory and other states also. As this program has started yesterday on 21st of June on International Yoga Day, that with the keynote address of great Professor Madhu Singh. We all must thank Professor Saifullah and his team for giving the platform to the participants, to the teacher educators to learn from these great educationists. It is not easy to have a lesson to learn from Professor Madhu Singh normally, but this college is great enough to invite her and made her lesson online at online mode and really have delighted all the participants with their enthusiastic and resourceful deliberation. The keynote address was followed by the great professor of the university, Professor Sushant Pandaji, as he is the symbol of integrity, honesty, intellectuality, and above all, a great academician. Professor Madhu Singh threw light on the teaching learning skills, approaches, but the leadership qualities are also important for teachers. Because in addition to teaching and learning, a teacher must be a leader. And this part of the program, the leadership which I am telling, has properly deliberated, has properly done by Professor Sushant Pandaji in the detailed note, in the detailed interaction yesterday on the first day of the FDP. As the organizers of this 3-day FDP has chosen the topics, that is the presentation, skill of presentation, then skill of learning and communication. You know, with the advent of technology, with the advent of challenges in education, and with the demands of the society, the need of the hour is to update the teachers with the latest skills, with the latest knowledge about teaching and learning. Because in addition to the teaching and learning, a teacher has to take part in various activities, has to organize various academic activities as well as co-curricular activities in the colleges and schools. So a teacher must be developed at all-round basis. A teacher must be all-rounder, not only a good teacher, not only a good learner, but he must be all-rounder,
all-round best, all-round development should be there in the teacher. As the sub-themes are, that is learning skill, then presentation skill, and communication skill. We must be having a lot of that content within us. We may be, as teacher educators or teachers or just human beings, we may be having a lot of academic knowledge. We might be PhDs, MPhil, MA in various subjects, having a lot of content in our brain, have learned throughout our life a lot of content. But how to transfer that content? How to transfer that content to the learners? That is the question. The first, learning. A teacher cannot be a best teacher if he is not a good learner, because learning is a must. If you learn, then only you can transfer. If you do not learn, then what to transfer? Now, as far as learning is concerned, what to learn, how to learn, when to learn, and from whom to learn, which source to be chosen for the learning, that is very important. And now we have learned, a person is learned, a person has a great academic acumen, but he has to transfer that data, that information to the audience, to the students. Now, how to present that content to the audience, how to present that content to the students, that is a skill. That is a skill that we have to learn how to make it possible. Now, second question with us is the communication skill, how to communicate. Now we have good presentation. Now we have a content with us. Now how to communicate? How to communicate with the audience? How to communicate with the audience? What gestures you must be having at the time of teaching and learning? What actions you must be having at that time? What language you use at the time of the deliberation? What is the understanding level of the audience, of the students? And how to transfer your learning to the audience, that is the skill. That is the skill, and that you are learning, that we are all learning in these 3-day FTP program. So as you have seen that electronic gadgets like mobiles, laptops, and other technological gadgets, they are to be updated. So as the teacher. So teacher has to update himself from day to day and get the latest knowledge. Today is the time of artificial intelligence. Today is the time of computers. Today is the time of latest skills, as ma'am and sir and Sushant sir has explained in a very good manner, that each and every teacher must be well versed with all these skills, with all these approaches, with all these techniques, and then only he can be a very good teacher. Then only he can deliver the best in the classroom. Then only he can teach other colleagues in the institution, and then only our society will be benefited, and then only the demands of the society will be fulfilled. In addition to these 3 aspects which has been chosen by the organizers, by the coordinators of this program, there are so many programs. As I told you, there are co-curricular activities, and in addition to the co-curricular activities, there are some tasks which are to be performed by the teachers in the institutions, in the schools and colleges, like the maintenance of discipline, maintenance of registers, maintenance of the stock register, maintenance of salary register, maintenance of the attendance register, maintenance of the stock, all the parts, all the tasks are to be done by the teacher. So we have to be well versed with all these tasks.
So one day has already gone. Now today is the second day, and today's program, today's resource person is Professor J.N. Balia. And as I know personally, Professor J.N. Balia, he is a person of par academic excellence. His talk related to FDP will not be a less than any treat for all of us. I personally have learned a lot from the great professor. I am sanguine that today's academic activity by Professor J.N. Balia will go a long way and will be fruitful for the teachers, for the teacher educators, for the students in the long run. So, so the activities which is going to be held tomorrow on third day of the FDP will also be fruitful for all the participants and all the learners here, because now the shift, earlier it was teaching and learning. Earlier it was teaching first, then it shifted to teaching and learning, and now it is the learning which is taking place. Teacher as well as student, teacher educator as well as a pupil teacher is learning and learning and learning. So keeping in view the importance of the all-round development of the teachers, Ramist College of Education, Basoli, affiliated to the University of Jammu, took a lead and gave a great opportunity to the teacher, educators and pupil teachers across Jammu and Kashmir Union Territory to learn from the expert, eminent and efficient resource persons. I believe society in general and thousands of students in particular will be benefited by this 3-day faculty development program. Not taking much of your time, I personally welcome J.N. Balia whenever he will join the group. I welcome personally him on behalf of the Ramist College. And lastly, I extend my congratulations to the organizers, especially leader of the organizing committee, Dr. Saifullah Khanji, for conducting this wonderful program. In short period of time, I was yesterday asked by Professor Saifullah Khanji to have the interaction with all of you. I am as learning as you are. I am not an academician of that stature, but it is I am really very lucky and fortunate to have interaction with all of you and to learn from all of you and from the eminent personalities who have delivered their lectures, and in future also in tomorrow and today's lecture we all will be benefited, and I hope this FDP will go a long way and will benefit thousands and crores of students in time to come. Thank you very much. God bless you all. Thank you, sir. Thank you for honoring these functions with your valuable thoughts. You told us about the different qualities like communication skill, which is very important for becoming an efficient teacher. Without the proper communication, a teacher cannot be an efficient teacher. Now, next, I would like to welcome again our expert, our resource person of today's function, who is none other than Professor Dr. J.N. Wadia, Department of Educational Studies, Central University of Jammu. Dr. J.N. Wadia has a vast experience of teaching and administration in teacher education institutes as teacher educator, as well as principal for last 35 years, and is presently working as head, Department of Educational Studies, Central University of Jammu, Jammu. He is having doctorate in education along with postgraduation in 3 subjects, that is
education, mathematics, and sociology, and many other academic credentials during his period of service. He is also involved in the research work in the field of educational technology, curriculum development, and pedagogical practices, and written various research papers and articles in the relevant fields in the reputed journals at national and international levels. Dr. Wadia has also attended about 135 conferences, seminars, and workshops at international and national level. He has also presented the papers related to the issues of the discipline of education. He has authored 10 books on various educational issues, with teaching of mathematics, micro-teaching, curriculum development, and measurement and evaluation. His other works are also mentioned here, like he has also written various books like tribal education, action research, etc. Dr. Wadia is associated with various international and national organizations, bodies, as the life member in the executive boards. He is also in the editorial boards of various journals at national and international level. I would like to welcome again you, sir. So, sir, Dr. G.N. Malia, sir, I request you to share your valuable knowledge with us as you are presented among us. Thank you, sir. Thank you. And welcome once again. Thank you, madam. I hope I am visible and audible to everyone present there. Somebody can say yes, I am audible. Yes, sir. We will listen you clearly. Yes. And the people sitting in offline situation, Dr. Khan and all the team members, the faculty members from Ramist College of Education. I believe, Khan Sahab, I am audible to you? Yes. Yes, sir. Yes, sir. You are. Yes, sir. You are First of all, and visible. I hope I am audible to Dr. Dhar also. Yes, sir. Cool. Okay, fine. Thank you everyone. It's very nice to see you all here after a long time in this situation. Like Dr. Khan and rather whole team from Ramist College of Education who decided to archive the craft this program on different aspects of teacher education. And I believe that the people around, I see that around 80 people have joined online and maybe around 10 people sitting in the hall also with the team of Ramist College. So it's a group of around 100 people or so. And we all are gathered here to talk about different aspects of teacher education. Dr. Dhar was sharing some very valuable, vital inputs about whole scenario of teacher education. How could we improve the quality of teaching and quality of teachers? Friends, first of all, let me convey my gratitude to Rajendra Sharma ji, the chairman of the college. I believe that I met him years back, and also Dr. Khan and all team members for giving me this opportunity
to be with you all and talk about very important issue, and that's the presentation skills. I am sure all of you understand, all of you realize, because I don't know why around 15 people have raised their hands, but that's nice that around 15 people have raised their hands before even I started my interaction. But generally we raise the hands because when we have to ask a question, but that's fine. This is an interactive platform, and we have to understand that, yes, there should be an interaction. So I'll be sharing my presentation, and I'm sure that this session would not be one-way traffic only. I'll be trying to be very brief in my presentation, and after that, we may have some interaction, we may have some question answer about the topic which we are dealing here. So with this note, with this kind of note of gratitude that all of us are gathered here to understand different aspects of our teaching profession. I could see, I believe this is the third day, if I understand the schedule. The first day, I think we had something regarding learning skills, then we had presentation skills, and then also, I think, communication skills. And all these skills are well connected. Friends, all of us have to understand, all of us have to realize that today is the time of recognition. If you are recognized, you survive in any profession, in any platform. Recognition means how do you reflect upon, how do you reflect your abilities, how do you actually convert your activities into real outcomes, wherever you are. If you are a housewife, if you are a tailor, if you are a teacher, if you are an industrialist, all of us always try to reflect whatsoever we have done, whatsoever we would like to do, जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हम कर चुके हैं, उसको हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं. We always try to do that. And for that purpose, these three skills are very important. Learning skills, presentation skills, as well as communication skills. Madam was just sharing something regarding my profile and all. I think most of you might be familiar that I am also looking after in our university, Central University of Jammu. It's, you understand, it's around 30 kilometers from Jammu, and from main road it's around 10 kilometers. So I pray to God that communication should be maintained or must be maintained, because sometimes power may go off and then there may be some problems. But I'll see that I'm always connected with you all. In our university, we have also got a different mission. In addition to I'm heading the Department of Educational Studies. In addition to, I'm teaching in my department to PhD students, to MD students. We also have a different mission. And since most of you are from the colleges of education, so let me share with you that in our university, we have another program, that is Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching, popularly known as PMMM NMTT. This is a Government of India program which Central University of Jammu got
around 5-6 years back. And fortunately, I am also heading that department. That's a different project. That is a different program of Government of India. Under that program, we keep on organizing different capacity building programs. I am sharing with you so that since you are all from colleges of education, the name of this mission is Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching. This is all over India program, and in J&K we have got this mandate. Under that, we keep on organizing various FDPs. Many of you might have attended that. Sometimes we organize training program for vice chancellors, for registrars, for teachers, for secondary school teachers. We have got different programs. We keep on doing that. अभी हमारा एक सेमिनार भी होने जा रहा है. I think with some friends I might have shared with you all that how to develop Indian knowledge system as per NEP 2020. आप लोग जानते होंगे, बहुत खुशी की बात है कि हमारे कंट्री को after a long gap we have got a policy which is a totally Indian policy. We have got so far 3 policies. This is the 3rd policy. First policy we had 1968, another we had 1986, and this is the 3rd one. 1992 में एक हमको revised document आया था 1986 का, but that is not counted as a separate policy. So practically speaking, this is the 3rd policy after independence. First policy we got after 20 years, we got independence in 1968. And then second policy we got after around 40 years of independence in 1986. And this policy we got in 2020. In this policy, we have different things which actually Dr. Khan has taken up. So I must congratulate Dr. Khan for that purpose. हम पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी हमको इस टाइम वो टीचर्स चाहिए, वो स्टूडेंट्स चाहिए, वो सोसाइटी चाहिए जिसमें लोगों के अंदर लर्निंग स्किल्स हों, कम्युनिकेशन स्किल्स हों और प्रेजेंटेशन स्किल्स हों. So Dr. Khan, you have taken up the topic, which is a very, very key topic, because this policy actually talks about how can we implement, how can we actually produce the students, the teachers who are good in presentation, who are good in communication, who are good in learning. So that's topic which you have chosen is बंद करता. Mr. Makhnu Sharma, please switch off, please. कोई कुछ कर लो. Thank you. So I believing so that the topic which we are sharing here is not only for teachers, but also for everyone to understand. And we will be sharing here, we will be talking here, enhancing presentation skills. Under that, I'll be sharing the contextual and procedural discussion. So this will be contextual and procedural discussion. I hope that you will understand that some intricacies of presentation skills. In our life, we get this opportunity always to do our presentation. So today in this discussion, I'll be briefly talking about what is presentation, what are the steps of presentation, and there is one standard framework of presentation, which we call it SSPH, which I'll be sharing. And mainly I'll be sharing, since most of you are from B.Ed colleges of education. So what are the presentation skills for teachers? So that would be the main point.
Now, the first thing which we understand when we say presentation, it could be effective communication, whether oral, written. It's not only we are talking about oral presentation, it could be written presentation. Because presentation skills, we do talk about our, as I said in my start of the session, हम अपने आप को रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं? How do we reflect ourselves? और रिफ्लेक्ट का पर्पस होता है कि जो मेरे पास जो कुछ है मैं दूसरे को देना चाहता हूँ, दूसरे को समझाना चाहता हूँ, and that is connected with the communication skills also. And again, you have to understand the presentation. Why presentation is very important in any organization, in any situation. Because we have some set goals. हमारे माइंड में कुछ सेट गोल्स होते हैं. अगर मैं आपसे भी डिस्कशन कर रहा हूं, मेरे माइंड में कुछ सेट गोल्स हैं, सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, उन ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करने के लिए मैं कुछ प्रेजेंटेशन करता हूं. इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन में हम लोग एक सिचुएशन में, चाहे वो कोई ग्रुप हो, चाहे कोई टीम हो, चाहे कोई मीटिंग हो, कई बार देखते हैं कि हम लोग को किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशंस करने होते हैं. हम लोग कभी कॉलेजेस में होते हैं, मुझे कोई टास्क मिलती है, मुझे उसका प्रेजेंटेशन करना है. स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स का प्रेजेंटेशन करना होता है. तो उस प्रेजेंटेशन में उसको कैसे करें एंड व्हाट द प्रिकॉशंस, प्रॉस एंड कॉन्स वी हैव टू टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो आपके साथ, आप काफी फैमिलियर हैं उसके साथ, प्रेजेंटेशंस के स्टेप्स क्या होने चाहिए. हाउ शुड वी स्टार्ट प्रेजेंटेशन? एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट प्रेजेंटेशन, व्हेन वी से प्रेजेंटेशन, it's not only the time when we start doing presentation. Behind an effective presentation, you have a very rigorous planning, very in-depth planning, very insightful planning. ये चीज बहुत अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. And when we say planning, जैसे हम लोग अक्सर सब बीएड कॉलेज से बात करते हैं ना, लेसन प्लानिंग, तो उसमें प्लानिंग जब हम लोग की बात करेंगे, उस प्रेजेंटेशन की प्लानिंग की बात करते हैं, तो हम लोग वी ऑलवेज एनालाइज अ सिचुएशन. वी ऑलवेज हैव टू सी व्हाट इज द टारगेट ग्रुप. हमने किसके लिए प्रेजेंटेशन करना है. जब खान साहब ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि आपने एक सेशन लेना है, तो मेरे माइंड में सबसे पहले ये आया कि हु विल बी द टारगेट ग्रुप, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या होगी, मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या होगा. अभी 2 दिन पहले मैं SCRT जम्मू में कहीं लेक्चर लेने गया था. जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया, द फर्स्ट क्वेश्चन आई ऑलवेज आस्क, व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस. दे टोल्ड मी दीज आर द डाइट ऑफिशियल्स. कभी टारगेट ऑडियंस पता चलता है बीएड कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कभी पता चलता है कि पेरेंट्स हैं. सो ऑलवेज यू हैव टू सी, वन हैज टू सी व्हाट और हु इज माय ऑडियंस. ऑडियंस का टेम्परामेंट कैसा होगा, ऑडियंस के एप्टीट्यूड लेवल क्या होगा. So that is known as audience analysis. Planning का मतलब आपको बहुत सारा एनालिसिस करना है. I hope the slide for planning for presentation is visible to you all. The slide transition में कभी प्रॉब्लम होती है. हेलो.
It's visible, sir. Okay, fine. Yes, sir. So these are 4 analysis broadly you have to do, friends. 4 analysis. First is content analysis, the subject analysis. जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक, जो कंटेंट मुझे प्रेजेंटेशन करना है उसकी थॉरो एनालिसिस, प्लानिंग की, अभी मेरा प्रेजेंटेशन बनाने से पहले. देन ऑडियंस एनालिसिस, टारगेट ग्रुप एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं. देन पर्पस एनालिसिस, मेरा पर्पस क्या है, प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है, उसकी थॉरो एनालिसिस करनी पड़ती है. And then only we have to design our presentation. You also always see that what would be my purpose, what would be my goals. And the 4th one is time analysis. Time analysis is also important. कि time duration को हम कैसे manage करेंगे. What will be the time analysis? Now, after this, we come to another very important issue, that, as I told you, when we do the analysis of subject matter, the content, we always have to see the objectives of the presentation, content to be covered, and sequencing arrangement of the content. Content की sequencing कैसे करें, content को कैसे arrange करें. कई बार हम मैंने भी आपसे कहा कि हम रिटन प्रेजेंटेशन की भी बात कर रहे हैं. आप लोगों ने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा समझाते होंगे अपने बीएड कॉलेजेस में कि भाई आपने अगर आंसर्स लिखने हैं, प्रेजेंटेशन करने हैं, व्हाट शुड बी द सीक्वेंसिंग, बिकॉज सीक्वेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेजेंटेशन में अरेंजमेंट ऑफ द होल कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. And then, as I said, another point, that is purpose of presentation, time duration, ये सब चीजों की हम पहले प्लानिंग करते हैं. एक चीज हमेशा हमारे खास आप सब लोग इस चीज को महसूस करते होंगे कि अगर हमारा प्लानिंग में थोड़ा सा भी मिसमैच हो जाता है, we always have to face some kind of drawbacks in the presentation. तो प्लानिंग हो गई जी. हमने प्लानिंग में 4 एस्पेक्ट्स की बात की. We talked about 4 aspects: content analysis, target group analysis, purpose analysis, and time analysis. इन चारों के एनालिसिस करने के बाद then we organize our content. फिर हम अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं. और कंटेंट को जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें आप सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है पहले इंट्रोडक्शन पार्ट. इन इंट्रोडक्शन वी ऑलवेज शेयर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू. दैट मीन्स द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी क्लियर टू द ऑडियंस. The whole thing. And that's why generally you might have seen in the first slides or whenever we start our presentation, we say what we are going to do. The audience, the target group should be informed before you start your presentation. And then you have the body. Body means main content, main slides, main material, जिसमें आप पिक्चर्स डाल सकते हैं, कभी वीडियोस कर सकते हैं. और हमेशा कोशिश की जाती है प्रेजेंटेशन जैसा भी करें, आपका प्रेजेंटेशन में बहुत सारे चीजें मिक्स होनी चाहिए. आजकल तो हम लोग को वी आर लिविंग इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ऑडियो कंटेंट हो, वीडियो कंटेंट हो, कुछ पिक्चर्स हो, because sometimes people don't understand with your verbal discussion, and that's why you have some pictures, you have some video, you have some audio, you have some support material, and your presentation content should be concluded
with summarization. And summarization, you retrace the content concisely. जो भी आपने content लिया है उसको एक बार wind up करके sequentially उसको wind up करें. What you have done. We should not leave the presentation just without any summarization, and that's very, very important point. Now in the presentation, very important aspect is our support material. To make effective presentation, what should be your support material? Now, support material could be some illustrative examples. अभी आप सब जानते हैं, देखिए मैं हमेशा कई बार क्लासरूम में भी एग्जाम्पल देता हूं. And this example you have to understand, friends, very clearly. How presentation makes your whole target very fruitful. Presentation किसी भी context में बात कर लो. आपने अक्सर देखा होगा जब आप, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल की बात कर रहा हूं, जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो जो वेजिटेबल सेलर है उसने अपनी वेजिटेबल को कैसे अरेंज किया हुआ है, उसने कैसे उसको प्रेजेंटेशन किया हुआ है. हम we always go to the shop which has very good presentation. बहुत सारी शॉप्स हैं मार्केट में, आप हमेशा उस शॉप को प्रेफर करोगे जहां पर क्लासिफाइड अरेंज्ड वे में, जहां रेट्स लिखे होंगे, रेट लिस्ट होगी, जहां पर शॉपकीपर का बिहेवियर अच्छा होगा, उसका एटीट्यूड अच्छा होगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन में एटीट्यूड और बाकी सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. आप सब तो मास्टर्स हैं सब चीज की, आप लोगों ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सुनी होगी, और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हम बात करते हैं कैप की, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, जिसको महात्मा गांधी जी ने और कई लोगों ने उसको 3H कहा, लर्निंग थ्रू 3H, हेड, हार्ट एंड हैंड्स. और ये प्रेजेंटेशन में तीनों चीजों का इंटीग्रेशन है. So I just cited the example of vegetable seller. या जम्मू में या आपके शहर में जहां भी आप हैं, खासकर जम्मू में आप जानते हैं कुछ ऐसी शॉप्स हैं, स्वीट शॉप, जो बहुत फेमस है, और आप जाके देखते हो वहां कितना रश होता है. मैं कई बार बात करता हूं लोगों से कि जितने स्वीट शॉप्स वाले हैं ये कंटेंट तो वही लेके चलते हैं. कंटेंट मींस जिससे मिठाई स्वीट बनता है, जिसको हम लोग अक्सर खोया बोलते हैं, वो तो वही होता है सभी शॉप्स में. बट व्हाई डू वी गो टू अ शॉप ऑन द हायर रेट्स, वी प्रेफर टू परचेज फ्रॉम दैट शॉप? Friends, that is because the way that shop, the mithai wala, has made to go for effective presentation. उसकी स्वीट्स का, उसका प्रेजेंटेशन का तरीका ऐसा अच्छा होगा, मिठाई की जो प्रोसेसिंग की होगी, खोया तो वही सभी शॉप्स में वही खोया होता है. हम क्यों एक कहते हैं कि नहीं यहाँ का ये मिठाई बहुत अच्छी है, यहाँ की वो चाय अच्छी, किसी आप पर्टिकुलर चाय वाले के पास जाते हैं, चाय में तो सब लोग वही चीज यूज करते हैं, मिल्क, टी लीव्स, शुगर, अदरक, इलायची, सब लोग वही यूज करते हैं. बट व्हाई डू वी गो? द वे ही डू द प्रोसेसिंग ऑफ द कंटेंट, द वे ही डज और ही शी डज हर प्रेजेंटेशन. फ्रेंड्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड we have to understand the presentation makes you recognize, जैसे मैंने आपसे कहा. So you have to make your supportive material. You have to use your supportive material. How do we talk about supportive material? The illustrative examples, facts and figures, points for discussion, questions to pose, some exercise to administer, and sometimes we intentionally, friends, we create or crack some jokes or anecdotes, some examples, some situations. अभी मैंने एक anecdotes की बात की. I cited the example of मिठाई वाला.
sabzi wala. These are some of the anecdotes which you try to use in your presentation. Purpose is to simplify your discussion and some kind of outlining, some kind of highlighting. How do you write down, or how does the audience, the target group, write down the points? उसके लिए आपने क्या फैसिलिटीज दी है? और आजकल तो आप सब जानते हैं कि ब्लेंडेड सिचुएशन कर, अभी इस वक्त भी हम लोग ब्लेंडेड सिचुएशन में बैठे हुए हैं. कुछ लोग ऑफलाइन में हैं, कुछ लोग ऑनलाइन में हैं. मेरी एक पीएचडी की स्टूडेंट्स पीएचडी इसी पर कर रही हैं, ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर. आजकल का टाइम आफ्टर कोरोना, हम लोग पहले ऑफलाइन में थे, फिर ऑनलाइन शुरू हो चुके थे. कोरोना मेड अस टू अडॉप्ट कंप्लीटली ऑनलाइन. और अब आफ्टर कोरोना, आफ्टर 1 year हैज गॉन, हम लोग जिस सिचुएशन में आ चुके हैं, तो अब लोग कई बार ऐसी मीटिंग्स होती रहती है हमारी. We have blended situation. We do the blending of our sources. और blending situations में आपको ऑफलाइन भी हैं और ऑनलाइन भी हैं, उनके दोनों को टेम्परामेंट का ख्याल रखना पड़ता है. Now, one more important thing in presentation is what, friends, that is nothing but the rehearsal, the practice. आप अक्सर देखते होंगे कि प्रेजेंटेशन में, एक अच्छे प्रेजेंटेशन के जरूरी है कि उसकी आप एक रिहर्सल कर लें. और रिहर्सल कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हाउ डू यू रिहर्स फॉर प्रेजेंटेशन? आपने अच्छे एक्टर्स को देखा होगा, दे डू क्वाइट होमवर्क. मैं यहां पर बड़े सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, फ्रेंड्स. वी डू टॉक अबाउट सुपरस्टार्स लाइक शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन एंड मेनी एक्टर्स who are very popular. I think you all understand, you all realize that to make one movie, how much hard work they have to do with their script. कितनी मेहनत करते हैं. The superstar Amitabh Bachchan, you know that as on today, after so much of 40-50 years of his time in film industry, even today, as on today, whenever he does any movie, he does too much of rehearsal homework at home or in the studio to make his presentation effective. Whether his dialogue, whether his action, whether his interaction, friends, presentation में बहुत important है rehearsal. Sometimes we simply make our presentation material and we directly go for the presentation. No, we must rehearse. और उसके लिए आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि मेरी ऑडियंस क्या है. जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ऑडियंस एनालिसिस करी आपने, पर्पस एनालिसिस करी, कंटेंट एनालिसिस करी, और रिहर्सल में आपको अपने ड्रॉबैक्स पता चले. और आजकल तो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, आप रिहर्सल करिए, साथ में मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लीजिए और अपनी रिकॉर्डिंग को खुद देखिए. ऐसा मैं अक्सर करता रहता हूँ, कई बार अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि अपनी प्रेजेंटेशन से पहले एक अपना रिहर्सल प्रेजेंटेशन कर दो, जिसको हम लोग ट्राई आउट बोलते हैं. ट्राई आउट, उस ट्राई आउट को करो, या पायलट टेस्टिंग बोलते हैं इसको, पायलट टेस्टिंग. रिहर्सल, पायलट टेस्टिंग, ट्राई आउट, ऐसा करके. और आप एक सिंपल से मोबाइल से रिकॉर्ड कर लें. अगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड कई बार हैवी हो जाता है, बहुत ज्यादा स्पेस लेता है. और फिर उस रिकॉर्डिंग को सुनिए. You'll understand where were the gaps which you have to take care, which you have to improvise, which you have to modify, rectify when you go for the actual presentation. So rehearsal is very important. Rehearsal of all those points. और rehearsal एक होता है preliminary rehearsal, एक होता है complete rehearsal. अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई एक्टिविटीज करते हैं तो बच्चों कितने रिहर्सल करते हैं अपने प्रोग्राम्स के, लेकिन एक्चुअल जब स्टेज पर जाना होता है, स्टेज पर जाने से पहले उस स्टेज पर एक बार और रिहर्सल करना होता है. जब कभी हमारे ऐसे एनुअल फंक्शंस होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि वहां उसके कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं,
और अगर उन कंस्ट्रेंट्स पर हमने रिहर्सल नहीं किया तो शायद हमें कुछ ऑन स्पॉट प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो रिहर्स विद ऑल विजुअल एड्स एंड हैंडआउट्स, rehearse again and again to manage time, again rehearse in front of mirror or friend also. Sometimes we ask the friends कि भाई मेरा presentation सुन लो, मेरा देख लो, मेरा कैसा है. और मैंने आपसे कहा आप मिरर तो पुरानी बात हो गई, अब तो हम लोग मोबाइल की एज में हैं, तो हम लोग मोबाइल के थ्रू प्रेजेंटेशन कर सकते हैं. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, एंड दैट इज पोस्ट प्रेजेंटेशन एनालिसिस. ये भी प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने रिहर्सल किया और उसके बाद आपने जब प्रेजेंटेशन डिलीवर कर लिया, उसके बाद एक पोस्ट प्रेजेंटेशन एनालिसिस जरूर करनी चाहिए. व्हाट इज पोस्ट प्रेजेंटेशन एनालिसिस? इट इज आफ्टर योर प्रेजेंटेशन यू डू एनालिसिस, जिसमें आप फीडबैक ले सकते हैं, आपके सेल्फ रिफ्लेक्शंस, पीयर रिफ्लेक्शंस, आपके जो साथी लोग हैं उनसे आप रिफ्लेक्शंस ले सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, एक्सपर्ट्स के रिफ्लेक्शंस ले सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं. लेकिन सबसे बेहतर जो होता है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है. यू गेट द सेल्फ फीडबैक और उसमें आपको पता चल जाएगा, आप अपना खुद अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि मैंने कहां पर कौन सी चीज को, यू कैन फाइंड आउट द गैप्स. आप उन गैप्स को निकाल सकते हैं और गैप्स को निकालने से आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा प्रेजेंटेशन का. स्टार्ट में मैंने आपसे एक बात की थी, मैं एक फ्रेमवर्क की बात करूंगा, SSPH. ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन में, जिसको हम लोग SSPH फॉर्मूला बोलते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स में. एंड दैट इज स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन स्टाइल एंड हैंडलिंग क्वेश्चंस. आप क्वेश्चंस कैसे हैंडल करते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन की स्ट्रेटजी क्या है, आपका प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर क्या है. इट इज ओनली ऑडियो, इट इज ऑडियो विजुअल, इट इज समथिंग, जैसे हम लोग का भी इस तरह का ब्लेंडेड स्ट्रक्चर है. तो ये सब चीजों के अकॉर्डिंगली आपने अपने प्रेजेंटेशन को मैनेज करना है. फिर आपके प्रेजेंटेशन की स्टाइल क्या होगी, विल इट बी इंटरेक्टिव? अभी मैं इंटरेक्टिव नहीं कर पा रहा हूं, अदरवाइज जब मैं ऑफलाइन में होता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इंटरेक्टिव करूं, हर 5-10 मिनट में किसी से बातचीत करूं. अभी मैं उस रिदम को तोड़ना नहीं चाह रहा हूं बिकॉज हम ऑफलाइन सिचुएशन में भी नहीं है, ऑनलाइन सिचुएशन में है, लेकिन अक्सर हम इस चीज की बात हम करते हैं. और फिर आप क्वेश्चन की हैंडलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रेजेंटेशन में. अब लास्ट में आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप लोग उस पर फिर हमसे डिस्कशन करें. कुछ प्रेजेंटेशन के कुछ बहुत खास चीजें हैं जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रेजेंटेशन. एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लक्षण, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, और भी पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं. ऑडिबिलिटी, मैं ऑफलाइन सिचुएशन की भी बात कर रहा हूं, फेस टू फेस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या किसी भी तरह का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, ऑलवेज यू हैव टू इंश्योर द ऑडिबिलिटी टू द रिमोट person sitting in the hall or in the situation. Then pace means speed, you all understand. It should not be too slow and it shouldn't be too fast, too rapid. It should be balanced one. Then pitch is also very important. आपकी पिच, आपकी वॉइस की पिच, आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग कॉलेजेस में अक्सर बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल की, माइक्रो टीचिंग की बात करें अगर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, दैट इज स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन. उस स्टिमुलस वेरिएशन स्किल में हम लोग हमेशा पिच की बात करते हैं. आप देखते होंगे जो हमारे ओरेटर्स होते हैं, जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वो पिच में बहुत पिच को बहुत मैनेज करने की कोशिश करते हैं. अगर अच्छे ओरेटर्स की बात करें, हमारे लोग अक्सर एग्जाम्पल्स मूवीज में लेते हैं,
या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स में अक्सर लोग हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेते हैं, कई बार मोदी जी के भी नाम लेते हैं अच्छे ओरेटर्स में, और भी हमारे इंडिया के सिचुएशन में बहुत से ओरेटर्स हैं, बिकॉज दे मेंटेन द पिच, दे मेंटेन द पेस. And more important is articulation and modulation. How do you modulate your presentation, your voice? How do you articulate your voice, your words, the pronunciation of the words, the clarity of the words, mainly for face-to-face situation. Online में तो दूसरे factors भी आ जाते हैं, communication barriers हैं, आपका टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बैरियर्स हैं, लेकिन अगर आप फेस टू फेस में हैं तो आर्टिकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मॉड्यूलेशन, हाउ डू यू मॉड्यूलेट योर वॉइस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एम्फोसिस, आप किस टॉपिक पर, किस चीज पर आप एम्फोसिस दे रहे हैं, किस एरिया पर एम्फोसिस दे रहे हैं. आपके प्रेजेंटेशन में यू शुड नो व्हाट आर द की एरियाज, पूरे प्रेजेंटेशन में, पूरे कंटेंट में व्हाट आर द की पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू एम्फसाइज अपॉन, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरत है. और फिर पॉज, किस सेंटेंस के बाद, किस कंटेंट के बाद पॉज देना है. एंड देन यू हैव ऑल्सो टू मेंटेन एट ए स्पीकर द एनर्जी एंड enthusiasm. Not only your energy, but also you have to ensure that the energy of the audience, the enthusiasm of the audience, that has to be maintained. And that is a point which actually I wanted to conclude with, because my main concern is also to talk with you, because I believe that you are very good in your presentation. So I talked about that how do you plan your presentation. You do 4 types of analysis: content analysis, target group analysis, purpose analysis, and time analysis, the resource analysis. Then how do you design your presentation? How do you do the sequencing of presentation? That's also important. Another point also I talked about, that every presentation should be actually based on the rehearsal. Rehearsal is a very good point. Try out, जिसको मैंने कहा, उसके बाद आप कोई भी कभी भी प्रेजेंटेशन करना, हम हमेशा उसका एक ट्राई आउट. और प्रेजेंटेशन में एक चीज और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे बताई भी और उसको फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा. दैट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट. आप लोगों ने अक्सर सुना होगा फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन. जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हमेशा करते रहना चाहिए. यहां पर एग्जांपल आप देखिए, जब भी कोई घर में हम लोग जब खाना बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द लेडीज आर आल्सो सिटिंग हियर, तो हम खाना बनाते समय भी हम फॉर्मेटिवली इवैल्यूएट करते हैं अपने खाने को, उसके टेस्ट को देखते हैं. अगर हम बिरयानी बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, पुलाव में चावल के दाने को बीच बीच में देखते जाते हैं, ज्यादा ना पक जाए, कच्चा ना रह जाए. अगर हम नहीं करते हैं, कई बार हम बहुत हेस्ट में काम करते हैं और प्लेट में सीधे से सर्व कर दिया, तो जो समेटिव इवैल्यूएटर्स होते हैं, आपके मेहमान या आपके घर वाले, वो कहेंगे तो चावल कच्चा रह गया, इसमें ये प्रॉब्लम हो गई, नमक ज्यादा हो गया. इस चीज को मेंटेन करने के लिए अच्छे जो हमारे पर्पसफुल लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं. अपने प्रेजेंटेशन को लाने से पहले दे डू द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन व्हिच यू हैव टू ऑलवेज एंश्योर दैट यू डू. समेटिव तो होता ही इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि फिर आप फॉलोअप भी करते हैं. फॉलोअप करने से आपको और पता चलता है कि आपका क्या, कहां पर आपको गैप्स रहे, कहां पर आपके पॉइंट्स रहे, एंड दैट्स व्हाट you have to always do. So these are the points, these are the key things which you have to always do the presentation. And I'll end with this point, because after that I'll be happy if some people ask me the questions. That presentation, again I'm emphasizing upon, is not only the oral presentation I'm referring to, even the written presentation, and even any kind of descriptive presentation. कभी भी हमको प्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, चाहे इंस्पेक्शन होता है, डॉक्टर
खान साहब को पता है, खान साहब को हम सभी बीएड कॉलेजेस में कभी भी इंस्पेक्शन होते हैं, हम प्रेजेंटेशन करते हैं, अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं. सो रिफ्लेक्टिंग अवर situations is your presentation. That is the point which you have to understand, and that is actually the purpose. You have to understand what we have to do and what we are supposed to actually go ahead in the presentation. So with this, I believe I understand that we all have to understand, we all have to feel that presentation skills are very, very key to your academic, your professional success. Better you are in your presentation, in any profession you are, चाहे हम किसी भी सेक्टर में हो, इंडस्ट्री में हो, एजुकेशन में हो, पॉलिटिक्स में हो, your presentation makes you effective. Presentation makes you popular. Presentation makes or builds up your sustained survival. With this, I'm thankful to the organizing team and also everyone sitting here for listening me and also giving me this opportunity to do this presentation. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your kind gesture and motivation. You shared with us presentation skill. You said presentation skill are key to professional development. Your presentation makes you effective. Presentation is a method of effective communication, either oral or written. Purpose of presentation should be clear to all. You also told us a well presentation requires a well planning, and a well planning requires certain steps that are: what is subject matter, who is my audience, purpose of presentation, and time duration. You also told us about the different factors required for a proper and an effective presentation, that are audibility, pace, pitch, articulation, emphasis, pause, energy, and enthusiasm. Thank you, sir. Thank you so much. Now, it's the time for our discussion and feedback session. For this session, I would like to hand over the dice to Mrs. Anupam Sharma. Come, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Good afternoon to everyone. I'm here for your feedback. So, all of you know that feedback is very important. In order to evaluate the students as well as learning of teacher, it is very important. So, let me start with the participant. That how do you like this program? All the participants, online or offline mode, can present your feedback. Okay? Okay, we have done with feedback session. I hope, like myself, you also like this program. Thank you so much. See, I'm sorry to interrupt you all. The presentation or any discussion should be ended with some question answers. So there are two ways. I am very hard taskmaster. Dhar Sahab knows very well. Either you ask me the question, otherwise I'll ask some questions. Because there are only two ways. Either participants ask me some questions,
Because if there are around 60 people present here, I can see various faces here who are present here. So you can raise your hands. There is a way to ask the question. And it's not only that you ask a question, but you can share something, you can add something to the discussion. It's not only that you have to ask a question and you have to say it was very good. अभी मैम जैसे कह रहे थे कि बहुत अच्छा लगा. No, that's not the point. If 60 brains are sitting in this platform and some people I can see in the hall also, around 70 people are sitting here, 20 brains are, so you can add something to the discussion. कि सर ये भी हो सकता है, ये point भी हो सकता है. This issue can also be added, so that when I leave, I leave with some kind of learning from it. We are all learners. We are not experts or like that. So I would appreciate if someone from your side, whether offline platforms or online platforms, they add on something, they share something. कोई अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहेगा कि मैंने एक प्रेजेंटेशन किया, बहुत अच्छा रहा, मैंने ये चीज करी. So you have around 10 minutes. Any person can raise the hand, switch on the mic, and share something she or he would like to share regarding the topic presentation skills. कोई point आप add करना चाहते हैं, कोई चीज कहना चाहते हैं, अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं, you can do that. Thank you. Sir, may I allow to talk? Yes, Dr. Dhar. A very good afternoon to all. Everybody listen to Professor Balia. I believe that whosoever has listened to the great professor, he is very much fortunate, because the chances of listening him are very rare, because he is a very busy, he is out of his busy schedule. He spared some time for the teacher education, for the teachers. So for that, I congratulate and appreciate the efforts of the college, because they made it possible. Otherwise, it was not possible. As an audience and as a learner, sir, Professor Jain Balia sir, I have a question. Recently, I was asked by a reputed school in Jammu to deliver a presentation on the stress management, and the audience was about 300 teachers, and all of them not below postgraduate level. Minimum qualification was MSc, B.Ed, MA, B.Ed. I was asked 3-4 days before. I prepared a very good presentation as directed by you, as I have learned from people like you, experts like you, and I prepared that presentation. I also rehearsed many times that presentation. In other words, the presentation was step-wise in my mind. Step-wise. What is the first slide? What is the second slide? Each and everything was clear to me. I knew the audience. I knew the target. And I also did all these analysis to present my presentation on the topic. But when I reached that spot, the management of that school, they told me that you will not use your presentation. I told them, what is the reason? They told me that we know that you can speak. We have heard you a lot of time, but
we will not allow you to use the presentation. I told them what is the reason. I was having my laptop with me. I was having this in pen drive also, because you never know what is the setting there. So, but there was everything was placed there, but they never allowed me, because the management told me that whenever you switch on to the presentation, maximum audience that goes on seeing that, watching that photos, and they are not with you, they are not with your lesson. Number one. And ultimately, after the end of the day, they will not be having any idea what you told them. Number one. Number second fault on my side, for me, they told me that this is a sort of नकल. जैसे वो नकल करते हैं हम क्लासरूम में, ये आपके लिए एक नकल होगा. आप यहां से देखोगे और बोलोगे आगे, तो आपको क्या करना है फिर, जबकि आप बोल सकते हो. जब उन्होंने मुझे ये चैलेंज दिया, तो ये एक मुझे थोड़ा चैलेंज लगा. मैंने कहा ये तो बड़ी परेशानी हो गई, ये नकल समझते हैं इसको. तो I told them just get it closed. Although my presentation was totally interactive and based on the activity, because I used to, whenever I deliver any lecture or extension anywhere, I made every teacher to interact by one or the other way. But when they told me that this will not happen, this will be just audio, not visual, then फिर मैंने शुरू किया अपने हिसाब से. यहाँ तो मुझे था ही, तो मैं चल पड़ा. तो कोई 1.5 घंटा जो चलना था नॉर्मली, वो 2 घंटा 40 मिनट चला प्रोग्राम. लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात मेरे मन में समझ नहीं आ रही, जो मुझे आप बताएंगे. मेरा सवाल है ये कि क्या ये दोनों चीजें, एक में उन्होंने कहा कि ये टीचर हमारे यही देखते रहेंगे और ये ऐसे ही जाएगा. दूसरा, आप इसको देख के हमें बताओगे. ये दोनों चीजें थोड़ा मुझे कुछ समझ नहीं आया मुझे. ये थोड़ा सा उनका जो कंसर्न होगा वो देयर कुड बी सम हिस्टोरिकल सिचुएशन, या कभी ऐसा हुआ होगा उनके इंस्टीट्यूशन में, या हो सकता है किसी सेशन में, दैट द पर्सन हु केम ही जस्ट डिड द रीडिंग एंड ऑल दैट. क्योंकि और इसमें देखिए जो प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैंने एक बात कही भी अभी आप लोगों से, कि जब हम ऑफलाइन सिचुएशन में होते हैं, ऑनलाइन में तो एक अलग पैरामीटर्स आ जाते हैं. ऑफलाइन सिचुएशन की जैसे आपने बात की, तो धर साहब वो ऑफलाइन सिचुएशन की बात होगी, फेस टू फेस. आप फेस टू फेस ऑफलाइन, तो वहां पर आप जैसे लोग, बिकॉज यू आर सो सीनियर एंड वेटरन इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, कि जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो उनका कंसर्न तो हो सकता सही हो, कि वो सिर्फ स्लाइड्स को देखते हैं. हम अक्सर कहते हैं कि स्लाइड्स अगर आप पीपीटी ले जाना, उसमें मटेरियल बहुत कम होना चाहिए, कम हो, पॉइंट्स हो रेफरेंस के लिए. बाकी जो प्रेजेंटर है उसका आई कांटेक्ट जो होता है, क्योंकि आई कांटेक्ट में देखिए कम्युनिकेशन, हम लोग 3 तरह के कम्युनिकेशन की धरसा बात करते हैं. आप तो चैंपियन है कम्युनिकेशन के. एक वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन. तो जब हम लोग ऑडियंस के सामने बैठे होते हैं, तो एक तो हम हॉरिजॉन्टली कम्युनिकेशन देखते हैं सबको, कभी हम वर्टिकल कम्युनिकेशन देखते हैं, और कभी डायगोनल कम्युनिकेशन देखते हैं. तो हम कभी यूं जाते हैं, कभी ऐसे जाते हैं, कभी इधर जाते हैं. पॉइंट इज, मैं हमेशा अपने एक चीज कहता हूं प्रेजेंटेशन में, जब हम ऑडियंस को बात करते हैं, तो जैसे कोई होर्डिंग होती ना धर साहब, कोई होर्डिंग होती है, उस होर्डिंग में आपने देखा होगा, जैसे तवी ब्रिज में आप चलिए, साइड में एक होर्डिंग लगी हुई, बहुत बड़ा पोस्टर लगा होगा किसी फिल्म एक्टर का, किसी एडवर्टीजमेंट का, और आप तवी के एक साइड से निकले और दूसरे साइड तक जाएं तो लगेगा वो होर्डिंग आपको ही देख रही है. ये बेसिकली ऑप्टिकल इल्यूजन होता है. और ऑप्टिकल इल्यूजन में हमेशा हम इस चीज का ख्याल रखते हैं कि वो ये ऑप्टिकल, तो हम लोग कहते हैं जो प्रेजेंटर है वो इस तरह से प्रेजेंटेशन करे कि ऑडियंस में हर इंसान जो भी बैठा हो, किसी कॉर्नर में, उसको लगे वो मेरे से बात कर रहा है. एंड दिस इज द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन. अब आपने नंबर कहा 300 कि 300 का करीब थे, बड़ा हॉल होगा वो आप, इसीलिए मैंने एक पॉइंट अभी बात कहा था कि आपका जो आर्टिकुलेशन है, कई बार हम लोग इंटेंशनली ये करते हैं कि हम ऑडियंस में से जो पीछे लोग बैठे, अभी मैं 2 दिन पहले एक जगह प्रेजेंटेशन में गया, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम आप वाली बता रहे हैं, जो
तो वहां पर कई बार लोगों को बाय नेम बुला लेते हैं, हाँ सर आप बताइए, आप अपना पॉइंट दे दीजिए अगर आप किसी को जानते हैं। और कई बार ऑन स्पॉट जाकर हम थोड़ा सा लोगों के आई कांटेक्ट से पहले 10 मिनट में हमारा यही काम होता है कि हम पहले 10 मिनट में लोगों को समझ जाते हैं, नब्ज पकड़नी होती है ऑडियंस की पल्स को पकड़ना होता है कि इसमें से कौन सी ऑडियंस है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पकड़ना पड़ता है कई बार कि वो शायद इतने पैसिव होंगे या आपके इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनका कंसर्न ठीक हो सकता है, लेकिन अपने प्रेजेंटेशन में हम लोग टोटली स्लाइड्स को ना देख के उनके साथ इंटरेक्ट भी करें, और इंटरेक्शन में कई बार वी हैव टू मूव डाउन अमंगस्ट देम। अच्छे प्रेजेंटेशन में देखना होगा, मैं कई बार कैसा करता हूं दर साहब कि अपने स्टेज से उतर जाता हूं और उनसे कहता हूं मुझे जब पता चलता है कि ऑडियंस ज्यादा है तो मैं माइक ले लेता हूं, मूविंग माइक, मोबाइल माइक, और उससे ऑडियंस को, जब मुझे पता चल जाता है कि ऑडियंस शायद थोड़ी सी हेट्रोजीनियस है, ये ऑडियंस का नेचर पता है, इसलिए हमने ऑडियंस के एनालिसिस की बात की दर साहब। वो तो ठीक है, टारगेट ग्रुप पता चल गया आपको, लेकिन ऑन स्पॉट जो एनालिसिस होती है आपको पता चलता है कि हेट्रोजीनिटी बहुत है टारगेट ग्रुप में। तो आपको लग रहा है अगर हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है, तो फिर आप इंटेंशनली उनसे कहते हैं मुझे मूविंग माइक भी दे दीजिए, और मूविंग माइक से 2-3 बार ऑडियंस में जाएंगे तो आपको लोग समझ में आ जाएंगे ना। वो सारा माइक सिस्टम पूरा था और मूविंग माइक मेरे पास थी और मैं घूम रहा था पूरा। तो उससे काफी आपका पर्पस सर्व हो जाता है। बिल्कुल। और ये अच्छा हुआ प्रोग्राम। पर्पस ये है कि रिमोट कॉर्नर तक भी आपकी आवाज, आपकी बात कहे। और देखिए, एक तो यह है कि आपकी आवाज जोर से करने की भी बात नहीं होती, लेकिन कई बार हम लोग इंटेंशनली अपने आई कांटेक्ट को कंसंट्रेट कर देते हैं उस कॉर्नर में, जो कॉर्नर आपको पैसिव कॉर्नर लगता है, या जहां पर आपको लगे कि लोग बातचीत कर रहे हैं, आपके आपकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो हम उनकी तरफ आई कांटेक्ट, ये तो प्रैक्टिस हम लोग अक्सर अपने क्लासरूम में भी करते हैं। तो ये सब चीज कई बार हमको करनी पड़ती है अपने प्रेजेंटेशन के। लेकिन आप तो खैर इसके बहुत बड़े चैंपियन हैं, आपका तो लेक्चर्स लोग सुनते हैं और जरूर पता चलता है कि कैसे कैसे हम कोशिश करते हैं सर, आपको देख देख के हम भी चल पड़ते हैं। नहीं, बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन में। और कोई कुछ कहना चाहेगा ऑडियंस में से? सोनिया ठाकुर जी, अब पता चलेगा ना जो लोग बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म पर वो कितने लाइव बैठे हैं, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन सिचुएशन में बाय नेम बुला के सबसे बात करने वाला हूं। सोनिया ठाकुर के नाम से एक कोई पार्टिसिपेंट है, अगर अपने माइक को स्विच ऑन करके। अंजलि शर्मा, मैं 5 मिनट लेके एक्सरसाइज करूंगा। इस एक्सरसाइज में पता चलता है कि लोग कितने पैसिव और एक्टिवली